A very logical day to all of you. Hello, everyone. How is each one of you? See, the rains have started, the monsoon has started. So we have Monsoon Comfort, 28th June, first editorial of the Indian Express. So now what and how is Monsoon of Comfort to us? Let us read that. So after a sluggish first 2 weeks that saw India receive nearly 53% below normal rains, sluggish and below normal will give you the meaning of the word sluggish. It's slow, languid, easy होना बिल्कुल मतलब आराम से चलना उसे sluggish कहते हैं ऐसा जैसे तो ना लग गई हो कहीं पे पाँव पर. Right, so the sluggish first 2 weeks that saw India receive nearly 53% below normal rains, the southwest monsoon has picked up. Not only has the cumulative rainfall deficit for June 1 to 26 come down to 18.9%, the monsoon has covered roughly 95% of the country, as against only the northeastern half of the south till June 14. That's good for the plantings of rice, millets, maize, cotton, soybean, groundnut, arhar, moong, urad and other kharif crops. तो और कुछ नहीं तो तुम्हें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि खारीफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं. You'll also get to understand that kharif crops are sown in which season. So the current bountiful showers are more than enough for their taking off and should set to rest worries over yield losses from delayed sowing. Right? Current bountiful showers का मतलब bountiful means abundant. ठीक है तो showers का मतलब हो गया rains. तो रेंज जो अभी थी अभी हुई वो काफी ज्यादा हुई अच्छी हुई एंड दे आर मोर देन इनफ फॉर द टेकिंग ऑफ मतलब ठीक है स्टार्ट कर लें क्या सेट टू रेस्ट द वरीज ऑल्सो दे विल स्टार्ट विद द प्लांटेशन एंड दे विल सेट टू रेस्ट मतलब आराम आ जाएगा किस चीज को उनकी चिंता को कौन सी चिंता को जो यील्ड लॉसेस हो सकते थे डिलेड रेनफॉल से डिलेड सोइंग से मतलब अगर खरीफ क्रॉप्स को देर से सो किया सोना यानी बोना right? Sow means to usko bona, right? To put the seeds there in the ground. So that is the delayed sowing would have come up with the yield losses, right? And because delayed sowing will come up with the yield losses, that means reduction in the production. And because of that reduction in the production, the people would be or the farmers would be worried. Why? Because then they would tend to increase the prices and all. वो पूरा एक सिस्टम चालू हो जाता है. अब वो जो चिंता का विषय है उसे खत्म कर देते हैं. But crops need water not just for the seeds to germinate, जो कि initially जून वाले मंथ के लिए जरूरी था, but also during the vegetative and the early reproductive growth stages when they are developing roots, stems, leaves, and flowers. Therefore, July and August rains matter as much as June for the size of the crops to be harvested from September end. They are to be harvested. That means what? Kharif crops क्या हो गए? उनको सो करने का सीजन क्या रहा रेनी सीजन तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में हार्वेस्ट 4 महीने के हो गए सो दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट यू कैन वी कैन यूज द वर्ड लाइक इम्प्लाइड वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस तो इन्फरेंस क्या हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे तो सिंपल डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी जब पैसेजेस जब आते हैं तुम्हारे पास तो वो डेटा या सिंपल फैक्ट्स जो होते हैं व्हाट डू दे इंडिकेट दैट इज व्हाट यू नीड टू सी व्हाट एल्स यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दिस कंप्लीट पैराग्राफ वाज टॉकिंग अबाउट मॉनसून the timely monsoon or the reducing deficit in the rains and what is required more till September. All this was the subject matter here, but then what was implied, what can be assumed, what can be inferred will not be anywhere here in the paragraph, but this is what you need to understand. So what you inferred from this would be that the kharif crops would take this much time. Possible क्योंकि harvest के लिए तैयार है ये हम उसमें से conclude कर सकते हैं राइट तो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग में हमें ये 3-4 वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए कि व्हाट इज द अजम्पशन व्हाट इज द कंक्लूजन व्हाट कैन बी इन्फर्ड और व्हाट कैन बी a part of the argument right so this is very simple passage and therefore I'm taking the critical reasoning words here now that is where El Nino the abnormal warning of the central and eastern tropical Pacific ocean waters historically known to suppress rainfall in India might be a worry.
तो पहले तो उन्हें प्रोडक्शन के हिसाब से बोला कि ठीक है चिंता मत करो। अब चिंता का विषय क्या है कि वो एल नीनो जो है, ठीक है, इससे क्या होगा? What it does is it suppresses the rainfall usually. And if it is coming in these times, right, of June, July, August, September, it is definitely going to be a problem for us. Why? Because we need those kharif crops. We need a good yield of those kharif crops. So earlier forecasts pointed to its formation only towards August or later. But the US National Oceanic and Atmospheric Administration has already declared El Nino's arrival and its gradual strengthening into the winter through December, February 23-24, subnormal rains in the remaining part of the monsoon season, June to September, can potentially impact not only the current Kharif, its effects can extend even to the ensuing Rabi, that is winter spring crops, grown using the groundwater and dam reservoirs that are recharged refilled during the monsoon. राइट, तो खरीफ क्रॉप्स आपके पास हो गए, यू नो वेरी वेल, जिसको नहीं पता है वो भी समझ लेंगे कि खरीफ क्रॉप्स हो गए फ्रॉम द जून टू द सितंबर ऑफ द ईयर, एंड देन वी हैव राबी क्रॉप्स विच विल बी सोन फ्रॉम द विंटर टू द स्प्रिंग, दैट मीन्स अक्टूबर नवंबर से लेके फेब्रुवरी मार्च तक, ये 4 महीने उन्हें लगेगा, राइट। इन दोस डेज द व्हीट वुड बी सोन, देखो बोना और सोन दोनों का मिक्स हो गया। सो ग्राउंड वाटर, अच्छा, विंटर टू स्प्रिंग क्रॉप्स जो होते हैं उसके लिए तो रिजर्वॉयर्स काम आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि मानसून अगर अच्छी होगी तो ग्राउंड वाटर्स अच्छे से हो जाएंगे, जब ग्राउंड वाटर्स अच्छे हो जाएंगे तो द rabi crops will also be we'll be able to irrigate those crops well. If the monsoon is reduced, again there will be a problem. So this is of course a worst case scenario, something the governments nevertheless can ill afford to ignore, especially in a year leading to national elections. That means what? Now, see, from this part of the sentence, you can come up with something that can be concluded or something that can be inferred, right? So, now from this part, what can we infer? The inference, when it is connecting that the governments can ill afford to ignore, the government इस चीज को ignore नहीं कर सकेगी कि किस चीज को, that the people are see there's a problem in the irrigation or this problem because of the reduced monsoon. Right, insufficient monsoon, you can say. The problem will take place, say, in winter to spring crops, and because of this, the crops yield being affected there, it's going to go forward to the next election year. वहां पे problem हो जाएगी. Why? Because the people are already say in trouble, and when in trouble you will not be able to think properly, राइट। तो ये एक और पॉइंट हो जाती है कि देखो गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया है, अगर इसके पहले कुछ भी कर लिया हो, बट देन दिस इज व्हाट द पीपल विल थिंक, व्हाई? बिकॉज प्रेजेंट दे विल बी इन ट्रबल, राइट। सो हियर स्पेशली इन ईयर लीडिंग टू नेशनल इलेक्शंस में से हमने बहुत कुछ अज्यूम तो नहीं किया, हमने बहुत कुछ इन्फर कर लिया इसमें से कि गवर्नमेंट विल नॉट delay any steps or measures to be taken to prevent such a situation. So government has to be proactive. उससे पता है आगे ऐसा होने वाला है, तो इलेक्शन टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम ना हो लोगों को, इसके लिए उन्हें अच्छे से अभी से ही कुछ करना पड़ेगा. This is what we can understand. Now, on the positive side, though, the stocks of rice, wheat, and sugar are comfortable. So there's also the option for more imports of edible oil and pulses such as masoor, arhad, and urad, on which duties are nil or have been slashed. So if it is nil, and if we do not know the meaning of slash, we can at least understand it. It is either zero or the prices will be cut down very sharply. The slash would be a sharp cut. The NDA government has so far proved adept at supply side management. Supply side management, it is good, and so far proved. The adept means, adept is like dexterous, talented. तो dexterous हो सकता है कि हाँ गवर्नमेंट ऐसा काम करने के काबिल है और गवर्नमेंट करती है ये काम. Skillful बोल सकते हैं, simplest word here of adept, skillful, talented or adroit. Adroit is quick, active. So the government, NDA government has so far proved adept at supply side management measures, some of them sensible, that is lowering the import duties, and some retrograde, that is banning or restricting exports and imposing stocking limits on traders and processors.
तो रेट्रोग्रेड का मतलब समथिंग दैट इज टेकिंग यू बैकवर्ड्स. रेट्रो का मीन्स बैक होता है. So now one can expect more of these in the days ahead. ऐसा होगा. Meanwhile, there is another source of comfort. एक और चीज बढ़िया है. So Punjab and Haryana. Access to assured irrigation and government procurement at minimum support prices, इसे MSP कहते हैं, minimum support prices, means that farmers of the two states would face less issues as far as water availability for rice and wheat goes. This is one year when nobody, least of all the government, will want them to produce less of the two cereals and divert acreages towards millets, oilseeds, or pulses. Divert acreages का मतलब होता है acres of land. ठीक है. तो अगर इतने एकर्स ऑफ लैंड को अगर वो मिलेट्स या ऑयल सीड्स में टर्न कर दे, मतलब उसमें जो क्रॉप उन्होंने बोया है वो ऑयल सीड्स या कुछ हो और राइस और व्हीट ना हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा इस टाइम पर. Because what is required is maybe there would be insufficient rainfall. So what the first thing that we all require is the stocks to be full with the grains that the people take or consume. Right? So let's see the main idea. The monsoon has picked up, but government can ill afford to ignore the potential El Nino effect. That means El Nino will have a considerable effect if it comes in that particular time period where the water is required. Otherwise, monsoon सही है, यहाँ पे warning है. ठीक है? So this was quite easily, you could have extracted it from the passage, but yes, apart from the main idea, you need to understand the underlying thoughts, and therefore I mentioned a few words, a few techniques तो नहीं बोल सकते, हाँ, understanding हो सकती है कि passage में से हमें समझना कैसा है. I've tried to do that. So now let us see what the third part contains. That is vocabulary. Sluggish, I gave you a hint while discussion that sluggish का मतलब होता है lazy, lackadaisical, languid, lackadaisical. क्लमजी कर सकते हो. तो स्लगिश को मैंने एक हिंट दिया था, ऐसा जैसे तो पाँव पे लग गई हो. तो जो पाँव पे लग जाती है तब हम कैसे धीरे 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 चलते हैं, तो उसे स्लगिश कहते हैं. राइट. क्यूमुलेटिव लाइक अक्यूमुलेट करना, गैदर करना. तो क्यूमुलेटिव इज ऑल टुगेदर. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो सकती है, क्यूमुलेटिव मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. क्यूमुलेटिव यानी तुमने स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, 1 साल का, 2 साल का. 1 साल में अगर तुमने 10 किए तो दूसरे साल में 5 किए, तो क्यूमुलेटिव आपका 15 हो जाएगा. दिस इज द क्यूमुलेटिव स्कोर और द क्यूमुलेटिव रन्स दैट यू हैव मेड इन द फील्ड. Abnormal and subnormal I have written here just to show that we have this word norm. और norm का मतलब होता है, norm means like an unwritten rule, you can say, dictum, you can say, dictat, you can say, और creed, you can say, कि हाँ यही बातें इसी तरीके से होती हैं. ठीक है, ऐसा ही काम होता है, तो वो नॉर्मल होता है. वो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स. अब नॉर्म से जो सोसाइटी के हिसाब से चलेगा वो नॉर्मल, सोसाइटी के कही हुई बातों से अलग चलेगा वो एबनॉर्मल. राइट. और सब नॉर्मल हो गया. सब मीन्स अनदर वर्ड यू हैव, सब इज अ लोअर लेवल. ये ग्रेड है, ग्रेड के नीचे का लेवल जो रहेगा वो सब हो जाएगा. सो subjugation means you are under somebody else's control, उसे subjugation कहेंगे. ठीक है. then subdivision, sub inspector. right. always subordinate. ठीक है, ऐसे और भी वर्ड्स में मिल जाएंगे. तो सब नॉर्मल यानी नॉर्मल से बिलो. ensuing से कहा था कि ensuing rabi crops, तो something that is following, right, which has to come after, right, so that is like subsequent. ठीक है. तो खरीफ क्रॉप्स हो जाएंगे, उसके बाद क्या आएगा, विंटर स्प्रिंग वाला सीजन, तो उसमें आएगा रबी क्रॉप्स, so that is the ensuing crops, right, the subsequent or following. Reservoirs, you can say they are the ocean, they are the water bodies as such नहीं होते,
लेक्स हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर लेक्स हो सकते हैं, स्प्रिंग्स हो सकते हैं, नदियां हो सकती हैं, कुछ भी हो, पर वो वाटर बॉडीज ही हम, इन शॉर्ट वी कैन राइट दैट वाटर बॉडीज. So that reserve, because even lake is a reservoir, right? Bodies. So we'll write what reservoirs means water bodies. Another word that you can understand here is the word reserve. तो वहां पे पानी वो जमा करके रख देता है पानी, तो उसे हम रिजर्वायर कहेंगे. ठीक है. स्लैश, एज आई सेड अर्लियर, स्लैश का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग कट. अडेप्ट, आई गेव यू द वर्ड्स skillful and talented and dexterous and adroit. चार वर्ड्स तुम्हें लिख के दिए. ठीक है. नहीं लिखे होंगे तो वापस देख लेना, बट आई एम राइटिंग इट हियर नाउ. Adroit and dexterous you can write. राइट. रेट्रोग्रेस में आई गिव यू द वर्ड रिग्रेस. डिटेरियोरेट, डिसइंटीग्रेट मतलब पीछे चले जाना, पलट जाना, बट यू आर गोइंग बैकवर्ड्स. राइट. रेट्रो डांस होता है, रेट्रो म्यूजिक होता है, रेट्रो फैशन होता है, कुछ भी हो रेट्रो. रेट्रोग्रेस होता है गोइंग बैकवर्ड्स. ग्रेस मीन्स टू द स्टेप दैट यू आर टेकिंग, और ग्रेस इज स्टेप. तो प्रोग्रेस यानी आगे जाना, रीग्रेस यानी पीछे जाना, रेट्रोग्रेस यानी पास्ट में चले जाना. राइट. प्रोक्योरमेंट हमने किया था, मार्जिनल प्राइस होती है. राइट. तो प्रोक्योर इज टू टेक. व्हेन यू गिव मनी you will take that. So what does the government do? The villagers have done production of soybean, right? और सोयाबीन मार्केट में नहीं जा रही है, ठीक है. गवर्नमेंट को उस सोयाबीन को देने के लिए दे ऑलरेडी गिव अ मार्क्ड प्राइस देयर, राइट, दैट दे आर गोइंग टू टेक इट इन दिस, एटलीस्ट दिस, वो मिनिमम वाला हो जाएगा. इतनी प्राइस में तो आपसे सोयाबीन वो खरीद लेंगे, ऑयल सीड्स खरीद लेंगे. देन दे कैन कम अप विथ सेलिंग इट, और दे कैन एक्चुअली गो फॉर वेरेवर वॉट एवर इज यूज्ड. उसका प्रोडक्शन कभी ऑयल सीड्स चाहिए, कभी ऐसे ही चाहिए. So that is how they did. They procure cotton, they would procure jute. Why? Because there are government like public sectors हैं, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है तो वो भी हमें गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है ना कि कॉटन कहाँ से आएगा. तो प्रोक्योरमेंट प्राइजेस दी जाती हैं जो सेफली उनको लाइक दे विल बी बाइंग इट, तो उनका सेल्स जो है वो डेफिनेट हो जाता है फार्मर्स का. तो दे नीड नॉट वरी अबाउट इट. So that's all for today, and I hope you have understood this much. Or at least that even if we have a database passage, if we have a simple passage, but then how to understand what the underlying ideas are, ये समझ में आना चाहिए. और दूसरी बात, हम उन ideas को अपने हिसाब से, उस passage के हिसाब से, we can read the options and come to the right answer also. Right? That is what I am telling you, that you need to create the understanding up to that level. Right? So that's all for today, and have a very logical day ahead. So, well and now, bye.